Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 91 for that topic sexual reproduction in angiosperms. That we have been learning post-fertilization changes occurring after the fertilization by which ovule becomes a seed and ovary becomes fruit. In that I mentioned you that four parts we have to learn. One is the development of endosperm that we have completed in the last lecture. So please refer that. Okay, lecture number 90. Then that second is the embryo formation. Okay, how the embryo is developed there. That we have to learn in this lecture. And once that embryo is formed, it means that the seed is formed. Then the seed formation and the fruit formation. Nothing different. Okay. तो एंडोस्पर्म कैसा होता है हमने देखा है. We have seen that primary endosperm cell is developing into the endosperm, and that endosperm cells contain all the reserve food material, and that reserve food material can be utilized for developing embryo. बहुत ही सिंपल है. ओके, अब देखेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा होता है. हाउ इज दैट एम्ब्रियो डेवलपमेंट? Particularly said that even though there are two types of the plants on the basis of the seed, dicots and monocots, that dicotyl embryo and monocotyl embryo we know, okay, that they are different. The seeds of variety of angiosperms are different, but the earlier stages of embryonic development are same in all flowering plants. ये पॉइंट ध्यान में रखो. डायकॉट प्लांट अलग है, मोनोकॉट अलग है, उनके सीड भी अलग है. सीड्स के भी बहुत सारे टाइप्स हम देखेंगे बाद में, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, लाइक दैट. पर यहां पर पर्टिकुलरली एक बात जान लो, दैट अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो in all these types are almost the same. Okay, अब हमने जब देखा था, लर्न किया था डबल फर्टिलाइजेशन, वी हैव सीन दैट this embryo sac is there. Okay, so it contains this particular egg converted into what? That after fertilization this egg is converted into the zygote. Okay, ये zygote यहाँ पे बन गया है after the fertilization. Okay, and then that synergites etc. they will go on degenerating. And this is the PEC. ये PEC है. तो हमने देखा PEC से एंडोस्पर्म बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म से ये ट्रिपलेट है. ये झाइगोट जो है, ये झाइगोट क्या करता है? इट डेवलप्स ए वॉल अराउंड इट, एंड दैट is now remember this is particularly the micropylar end I am showing. ये बात ध्यान में रखो, this is micropylar end of ovule and this is the chalazal end of ovule. Obviously I am showing you in the straight way. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में बता रहा हूं आपको. ओके, ये ऊपरी हिस्सा जो है वो माइक्रोपाइल है ओपनिंग. रिमेंबर, zygote is present towards the micropylar end. ये MCQ में आया तो PEC in the center, no doubt. But zygote जो होता है वो micropylar end में होता है. And now remember my friend, zygote first of all develops a wall around it, protective wall, thick wall, and then now it is called as the oospore. अब zygote के बाहर जब wall आएगा तो उसको क्या कहेंगे? It will be known as oospore. And this will undergo the development further. तो अब क्या होता है देखो, पर्टिकुलरली ये जो zygote oospore है, at the micropylar end it will divide into the two-celled stage. यहाँ पे उसके दो सेल्स बन जाएंगे. One will be the larger cell, other will be the smaller cell. Okay, the larger cell and smaller cell. So two-celled pro-embryo. Two-celled pro-embryo कहते हैं इसे. No doubt the division is mitosis. अब इसके ये दोनों भी डिप्लॉयड सेल रहेंगे. Okay, all division will be mitosis. इसके बाद में
मियोसिस कब होता है? ओनली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, हमको मालूम है। डिप्लॉइड का हैप्लॉइड होना है तो अभी नहीं, अभी तो पूरे डिप्लॉइड रहेंगे। नाउ एम्ब्रियो इज फॉर्म, इट इज अंडरगोइंग दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो इसको मैं अभी 2 सेल प्रो एम्ब्रियो को बाहर दिखाऊंगा, यानी थोड़ा एनलार्ज करके। वन सेल विल बी द लार्जर सेल, अदर विल बी द स्मॉलर सेल। ओके, द लार्जर सेल इज देयर नोन एज basal cell. Okay, and the other will be called the apical cell, terminal cell. तो इस बेसल सेल को सस्पेंसर सेल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंसर सेल और बेसल सेल। ओके, that is also diploid, and this is the that what to say that apical cell or terminal cell, or that is also called as embryonal cell। उसे एम्ब्रियोनल सेल भी कह सकते हैं, विच इज डिप्लॉइड। सस्पेंसर और बेसल सेल इज देयर, अपाइकल सेल और एम्ब्रियोनल सेल इज देयर। ओके, वेरी क्लियर। ये प्रो एम्ब्रियो मैंने दिखाया, 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ओके, अब क्या होता है देखो, अब ये सस्पेंसर सेल जो है वो डिवाइड होने लगती है, and then that form a 6 to 10 cells in a row there, and that structure is called as a suspensor। वो सस्पेंसर सेल से बनने वाला स्ट्रक्चर है। उसमें एक ऊपरी सेल थोड़ा स्टाउट होता है, बड़ा होता है, बाकी के सेल्स दे आर स्मॉलर। 3 1 2 3 4 5 6 7 like that। ओके, जो भी रहेंगे आपको अगर निकाल सकते हैं। और 6 to 10 cells are there, and this structure is now known as suspensor। ये सस्पेंसर नाम का पार्ट है। एट द सेम टाइम दिस apical cell divides into the structure which is called as the multicellular embryo now। okay, तो पहले उसके 2 सेल बन जाएंगे ट्रांसफर्स डिवीजन से, फिर उसमें और डिवीजन होते जाएंगे, एंड देन 8 सेल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। ओके, एंड अल्टीमेटली ऑक्टन स्टेज के बाद मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज फॉर्म वेरी फास्ट, एंड ए ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो विल बी डेवलप्ड। ओके, a globular multicellular embryo will be developed। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। ये बहुत ही फास्ट होता है दोस्तों, एंड इट इज वेरी माइन्यूट, एट वेरी माइन्यूट लेवल। यहाँ पे तो भी हम बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। सो दिस इज पर्टिकुलरली ग्लोब्यूलर। पर देखो बायोलॉजिस्ट का भी और हमारे ह्यूमन नेचर का भी कितना सही तरीके से पढ़ा है, रिसर्च किया है। दिस इज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ओके, मल्टी सेल्यूलर। फिर उसके बाद में इसका शेप थोड़ा चेंज होने लगता है। अब फिर ये हो गया सस्पेंसर का ऊपरी सेल, और ये बाकी के 1 2 3 4 5, अभी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 7 लाइक दिस, ये सस्पेंसर ही है पूरा। ओके, एंड नाउ हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अब ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो बनता है वो थोड़ा हार्ट के जैसा बनता है। उतना तो नहीं आता, मुझे तो उतना लगता नहीं है, पर क्यों ऐसे कहते हो किसको लाइक दिस? ये कहाँ हार्ट आ गया है? हम तो हार्ट जो दिखाते बहुत अलग है, isn't it? हम जो हार्ट दिखाते हैं, या हम ऐसा करते हैं ऐसा, और बाद में ऐसा करते हैं, isn't it? कुछ तो भी, तो वो ऐसा थोड़ा ही शेप आ रहा है। यानी उसको हार्ट शेप क्यों कहा होगा? Particularly from one end it is broader, and from other end it is becoming, what do you say that, narrower। तो ये टेपरिंग होते जाता है नीचे। अब सस्पेंसर का रोल क्या है देखो, दिस इज हार्ट shaped embryo, globular will be changed, and finally it will be changed into horseshoe shaped embryo।
ये हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो यानी कैसा होगा? व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्स का शू? आपने देखा है कभी शू? पर्टिक्युलरली घोड्याचं नाल ज्याला आपण. So this structure will be formed there, having a horseshoe shaped structure. Like this. And this is known as horseshoe shaped embryo. And then it develops the different parts of the embryo like radicle, plumule, etc. Okay. So ये सस्पेंसर का रोल क्या है? That suspensor pushes the embryo into the endosperm for deriving the nutrition from endosperm. एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेने के लिए, एंडोस्पर्म तो नीचे आएगा ना अभी यहाँ पे, तो ये सस्पेंसर इसको एम्ब्रियो को नीचे ढकलता है. तो ये ध्यान में रखो that particularly apical cell or embryonal cell is going to develop into that embryo there. By mitotic division, multicellular mass is formed, which is first globular shaped, then heart shaped, then horseshoe shaped. So arrange the different stages of embryo in correct sequence. तो करेक्ट सीक्वेंस में अगर देना है तो टू सेल्ड स्टेज, ऑक्टन स्टेज, देन ग्लोबुलर स्टेज, देन दैट हार्ट शेप एंड हॉर्सशू शेप. ये करेक्ट आ जाएगा. या टू सेल्ड एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो. The significance of suspensor is suspensor developed from that basal cell has got the significance that it pushes the developing embryo into the endosperm for deriving the nutrition. Simple. Then another thing, that suspensor cell of the proembryo is present at, correct answer है micropylar 8, and the embryonal cell of the proembryo is present at, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? टूवर्ड्स द सेंटर देयर. ओके, टूवर्ड्स द एंडोस्पर्म. ओके, so I am sure that you have understood this part. Now the structure of dicot and monocot embryo we shall learn in the next video. Okay, so do like and share this video to your friend circle, and do subscribe to my XIIth Biology and XIIth Chemistry channels. Thanks a lot.